Hello everyone. So this is our third and last lecture of high performance liquid chromatography. In this lecture we will be moving forward with the detectors that are yet left to discuss, and then we'll be learning about the advantages and disadvantages of high performance liquid chromatography, and we'll conclude this lecture by discussing the applications of high performance liquid chromatography. Starting with refractive index detector. The refractive index detector is the most universal detector for liquid chromatography. So now one thing that I would like to add apart from the things mentioned here is that we already studied refractive index detector is a special type of detector compared to other detectors. Why? Because जो refractive index detector है वो bulk property detector है. बाकी मोस्ट ऑफ द डिटेक्टर्स जो हम देखते हैं वो सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स होते हैं, वेयर इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर हियर, ये हमारा बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर है. एंड अलोंग विद बीइंग अ बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर ये सबसे यूनिवर्सल डिटेक्टर है. मतलब दिस डिटेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एनालिसिस. सब में मोस्टली ये रिस्पॉन्स देता है. दैट इज वाई दिस इज अ यूनिवर्सल डिटेक्टर. It was one of the first liquid chromatography detectors developed. सबसे पहला जो LC detector आया था उसमें से एक है ये refractive index. It is that old. Compared to other detector types, however, its detection limits are poor. लेकिन अब when you compare refractive index detector with other type of detectors, हम देखते हैं कि इसकी जो detection limits है वो बहुत poor है. Means इसके रिस्पॉन्सेज इतने satisfactory नहीं है. That's what they mean to say, that the detection limits are found to be poor. Therefore, generally a refractive index RI detector is now used only when other techniques fail. Because we saw universal detector है very good, लेकिन इसकी detection limits बहुत poor है. That's why ये detector हम तभी use करते हैं जब बाकी कोई detector काम नहीं आता. When other techniques fail, when you are unable to use the other high efficient detectors, जब वो तुम अप्लाई नहीं कर सकते एक separation के लिए, only then will you go with the refractive index detector. In refractive index detector, the difference in refractive index is measured between the pure mobile phase and the solution containing an eluted compound. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है उसमें हम कैसे मेजर करते हैं. तो एक तुम्हारा वो प्योर मोबाइल फेज रहेगा एंड द सेकंड विल बी मोबाइल फेज प्लस द कंपाउंड. तो उसको एल्यूटेड मतलब निकला हुआ कंपाउंड. सो मोबाइल फेज प्लस कंपाउंड और मोबाइल फेज दो चीज रहेगी. तो एक पहले मेजर होगा प्योर मोबाइल फेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वो मेजर्ड क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मोबाइल फेज प्लस कंपाउंड. क्योंकि इसमें कंपाउंड भी प्रेजेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, ऑब्वियस है. सो देन यू विल कंपेयर दीज टू एंड द डिफरेंस इज मेजर्ड. A refractive index detector is probably the most widely used in GPC, which is gel permeation chromatography. सो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि वो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है. द मेन एडवांटेज ऑफ एन RI डिटेक्टर इज दैट एनी पॉलीमर सॉल्यूशन विल जनरेट अ रिस्पॉन्स. सो नाउ हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में यूज क्यों करते हैं? बिकॉज कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन तुम ले लो, वो पॉलीमर सॉल्यूशन रिस्पॉन्स देगा इफ इट्स RI डिटेक्टर. व्हाई? Because RI detector is a detector which deals with bulk property detection. तुम्हारा मोबाइल फेस भी रिस्पॉन्स देता है इसमें. So polymer solution will generate a response. So that's why it is most widely used in gel permeation chromatography. This detector has several disadvantages. Obviously because it's not used that often now. बाकी सब टेक्निक फेल होती है तभी हम इसको एम्प्लॉय करते हैं.
That's why this detector is meant to have disadvantages. So what are the disadvantages? Low sensitivity, 2 to 3 orders of magnitude lower than UV. इसकी sensitivity बहुत कम है. And plus it is very sensitive to pressure, flow and temperature fluctuations. Sensitivity बहुत कम है तुम्हारे detector की, 2 to 3 magnitude कम है UV से भी. एंड इट इज सेंसिटिव, मतलब प्रेशर को चेंज करो, फ्लो को चेंज करो, टेम्परेचर को चेंज करो, तो थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा इन तीन चीज़ों में, प्रेशर, फ्लो एंड टेम्परेचर, it will have a big drastic impact on your peak. So that's why it is said that it is very sensitive to pressure, flow and temperature fluctuations. Now this is the basic Snell's law that I have discussed over here. The relationship between the refractive indexes of two media and the angle of incidence and refraction, पूरा जो relation है refractive index दोनों media के, अलग अलग medias के, plus angle of incidence and angle of refraction, ये सबका जो relation है, अगर उसको explain करना है, then you will use Snell's law. And what does this Snell's law state? So eta 1 into sin theta 1 is equal to eta 2 into sin theta 2. अब theta 1 जो है वो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, theta 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, eta 1 refractive index of medium 1 and eta 2 is refractive index of medium 2. So again just please look at the formula properly. Eta 1 into sin theta 1 is equal to eta 2, or you can also go with n2. I am preferring eta over here. n2 eta 2 into sin theta 2. So this is the Snell's law. ये reaction पूरा explain करता है तुम्हारा. This detector based on the deflection principle of refractometry. ये detector इसका principle क्या है? Deflection principle है. Because refractometry में the light is deflected from one media when it travels to this other media. So deflection is the principle over here. Only when an analyte has exactly the same refractive index as solvent, no response is obtained. कौन से केस में तुम्हें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा? जब तुम्हारे एनालाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्वेंट और एनालाइट दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फेज है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. सो प्योर मोबाइल फेज का जब मेजर होता है तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया. एंड नाउ आई एम मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोबाइल फेज, सॉरी मोबाइल फेज प्लस द कंपाउंड. सो मोबाइल फेज का तो 2 ही है, लेकिन मेरे कंपाउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 ही है. सो अगेन द अदर वैल्यू विल ऑल्सो बी 2. सो देन नो रिस्पॉन्स विल बी ऑब्टेन्ड बिकॉज मेरे कंपाउंड या एनालाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम टू दैट ऑफ द मोबाइल फेज, प्योर मोबाइल फेज या सॉल्वेंट. Light source in the visible range is used and photocells are used for the measurement of light intensities. Visible range की light source use करेंगे and then to detect the light intensity at the end you will be using photocells. The light passes through two prism shaped flow cells, one filled with pure mobile phase solution and one flushed by column effluent. So now I'll draw it so that you guys can understand. Consider दो prism shaped flow cells है. Okay, so now there are two prism shaped flow cells. एक में you are filling pure mobile phase. This indicates that pure mobile phase is filled, and the blue one indicates that इसमें मोबाइल फेज तो है ही, कंपाउंड भी है, मतलब कॉलम का जो निकल रहा है एफ्लुएंट वो है इसमें. So now obviously when the light will pass from here and then diffract and go over here, further diffract, so you can identify the difference between this medium
एंड दिस मीडियम, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस को मेजर कर सकते हो. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर. When the two solutions differ in refractive index, the light beam is deflected at the wall between the two optical cells through an angle depending on the RI difference. जब दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे डिफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो लाइट फर्दर डिफ्लेक्ट होती है. एंड दैट जितना वो डिफ्लेक्ट होती है वो डिपेंड करता है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा. The advantages of refractive index detector: universal response. No matter what the compound, तुम्हें response मिलेगा. It is a universal detector. That is the biggest advantage of RI detector. Low sensitivity to dirt and air bubbles in the cell. एयर बबल या डर्ट होगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है उन चीज़ों को लेके. Ability to cover the entire refractive index range from 1 to 1.75 RI. So this detector can cover the entire refractive index range, which ranges from 1 to 1.75. The range of the indicator is important over here. 1 to 1.75 RI पूरा कवर करता है. Disadvantages: relatively low sensitive. It is not that sensitive a technique. 2 to 3 orders of magnitude कम है UV से भी. General disability to easily remove and clean or replace the cell when filming or clogging occurs. अगर तुम्हारे सेल में क्लॉग हो गया कुछ तो it's very difficult to remove and clean that. So that is there. And also one more thing, that थोड़े भी temperature changes या fluctuations होंगे तो it will have an impact on the final results. So moving on to the next detector, evaporative light scattering detector, also known as, मतलब acronym of this detector is ELST. This is the short form that we will be using. Instead of evaporative light scattering detector, everywhere I have mentioned ELST. The ELST is a universal detector as long as the solute is less volatile than the mobile phase. So रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटर वर्जन है ये डिटेक्टर. ELST भी यूनिवर्सल डिटेक्टर है, सब रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन देयर इज अ स्मॉल कंडीशन. द कंडीशन इज दैट द सोल्यूट शुड बी लेस वॉलेटाइल देन द मोबाइल फेज. जब तुम इवापोरेट करना स्टार्ट करो तो मोबाइल फेज पहले इवापोरेट होना चाहिए, सोल्यूट नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई सोल्यूट शुड बी लेस वॉलेटाइल देन द मोबाइल फेज. पहले मोबाइल फेज वोलेटाइल वेपराइज हो जाए, बाद में सोल्यूट होना चाहिए. सो सोल्यूट शुड बी लेस वोलेटाइल देन द मोबाइल फेज. द लीनियर रेंज इज नॉट वाइड. इसकी लीनियर रेंज इतनी वाइड नहीं है. इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन यूवी एंड आरआई डिटेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड कैन बी यूटिलाइज्ड विद ग्रेडियंट इल्यूशन. सो ये इसकी सेंसिटिविटी अगर मेजर करो तो यूवी और आरआई के बीच में है. आरआई जितनी बुरी भी नहीं है, यूवी जितनी अच्छी भी नहीं है. इट इज मीडियम. बट आरआई के साथ यू कैन नॉट यूज ग्रेडियंट इल्यूशन, बट ओवर हियर यू कैन यूज ग्रेडियंट इल्यूशन. ELST is useful for detection of solutes that do not possess a significant chromophore but should not be used for thermolabile solutes. ELST डिटेक्टर कौन से सोल्यूट्स के लिए यूज कर सकते हो कि जिसमें क्रोमोफोर नहीं है. अगर क्रोमोफोर नहीं है तो तुम यूवी में नहीं डाल सकते वो चीज. यू कैन नॉट डिटेक्ट इट यूजिंग यूवी. सो दैट्स वाई देन यू कैन गो फॉर ELST. बट ओनली इट शुड नॉट बी थर्मोलेबाइल वंस यू अप्लाई हीट, बिकॉज इस टेक्निक में हीट एप्लीकेशन होगा. सो दैट्स वाई वंस यू अप्लाई हीट इट शुड नॉट बी डिग्रेडेड. ELST's response does not depend on the optical characteristics of the sample. RI detector में it was optical characteristics. So over here it does not depend on optical characteristics of our sample. So now this is the detection principle. 3 steps में divide होगा: nebulization, mobile phase evaporation and detection.
a simple three-step process that produces a signal for any non-volatile sample component. थ्री स्टेप का प्रोसेस है. नॉन वोलेटाइल सैंपल कंपोनेंट मीन्स कि वो सैंपल इवापोरेट नहीं होना चाहिए, पहले मोबाइल फेज वोलेटाइल होना चाहिए as compared to the analyte or sample. So that's why we are using this term over here. So now looking at the first step, nebulization. Inside the nebulizer, the column effluent passes through a needle, mixes with nitrogen gas and forms a dispersion of droplets. So yes, over here, yeah, this is the nebulizer. So inside the nebulizer, what is happening? Column effluent तुम्हारा पास होगा यहाँ से. ये नीडल जैसा है, दिस इज द नीडल लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ से तुम्हारा कॉलम एफ्लुएंट पास होगा. इट गेट्स मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस. ओके, इट गेट्स मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस एंड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, डिस्पर्जन ऑफ ड्रॉपलेट्स. सो इट्स क्लियर. नेब्यूलाइजर में कॉलम एफ्लुएंट पास होगा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा वहां पे, वहां से पास होगा, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होगा and then it forms this dispersion of droplets. That is the first step, nebulization. Droplets form होंगे. Second step, mobile phase evaporation. The droplets pass through a heated drift tube where the mobile phase evaporates, leaving a fine mist of dried sample particles in solvent vapor. So एक ट्यूब होती है, as you guys can see over here. This is the tube, right? So this is the drift tube. ड्रिफ्ट क्योंकि यहाँ से पास हो रहा है और ये ट्यूब हीटेड होगी. ये हीटेड ड्रिफ्ट ट्यूब में से तुम्हारे मोबाइल फेस और सॉल्यूट पार्टिकल्स पास होंगे. तो बिकॉज इट इज हीटेड, व्हाट विल हैपन कि तुम्हारा मोबाइल फेस इवापोरेट हो जाएगा. तो क्या बचेगा? सैंपल का ड्राइड सैंपल पार्टिकल्स बचेंगे सॉल्वेंट वेपर में. मोबाइल फेज इवापोरेट हो गया तो वेपर बन गया एंड उसमें तुम्हें ड्राइड के सैंपल पार्टिकल्स दिखेंगे. सो हीटेड ड्रिफ्ट ट्यूब में से यू आर पासिंग दीज थिंग्स so that the mobile phase evaporates off and you are left with a fine mist of dried sample particles in the vapor of the mobile phase. This occurs in the step mobile phase evaporation. The third and final step, detection. The sample particles pass through a flow cell where they are hit with a laser light beam. Light scattered by the sample particles is detected, generating an electrical signal. So the final step में what is happening? जो भी sample particles dried mist तुम्हें दिखा वो pass होगा through a flow cell. और इस flow cell में these particles hit these, matlab laser light beam over here, you can see, right? The laser light beam is hitting this particular particle over here. So the laser light beam will hit a particular particle. The red line you can see, right, in the third diagram. Laser light hit कर रही है तुम्हारे particle को. So as a result what will happen? वो particle light को scatter करेगा. And that light scattered is then measured and that will give you a final output of an electrical signal. So this process is clear. पहले nebulization होगा, फिर mobile phase evaporation होगा, and the third and final step where detection occurs using a laser light beam and then measuring the light that is scattered by the sample particles. Any non-volatile compound, chromophoric or non-chromophoric, can be detected. So this is an advantage that whether it is chromophoric or it doesn't contain any chromophore group, it can be detected as long as it is non-volatile in nature or less volatile than the mobile phase. या तो compound non-volatile होना चाहिए या फिर it should be less volatile than our particular mobile phase. It can be detected easily even if it has a chromophore or it lacks a chromophore. The response is based on the mass and the amount of light scattered, not refractive index differences between the mobile phase and the sample.
सो एज वी सॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर में तुम डिफरेंस मेजर कर रहे थे मोबाइल फेज एंड एल्यूएंट, मोबाइल फेज प्लस सैंपल में, कि दोनों के मीडियम में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मिल रहा है. Over here in this case, the response is based on amount of light scattered. कितनी light scatter हो रही है उस पे depend करता है. So this provides a more accurate representation of actual sample concentration and makes it ideal for purity analysis. So this will provide, तुम्हें जब तुम actual amount of light scattered को measure करोगे, this will provide you with an accurate analysis of how much sample is actually present, and thus when it comes for purity analysis, this is a better choice because this gives you the actual sample concentration, because you are measuring कि कितना amount light scatter हो रहा है based on the particular particle. So that will give you a better representation compared to just measuring bulk property कि refractive index measure कर लिया. So it's a better choice than RI detector. The ELST provides a stable baseline and is gradient compatible for improved resolution and faster separations. The ELST detector provides a stable baseline. इसकी baseline बहुत stable होती है. RI detector में we told right that small changes or fluctuations in temperature, pressure will cause drastic effect on baseline. यहाँ पे baseline काफ़ी stable रहती है. And plus ELST detectors can be used for gradient separation, and the separation is of better resolution and fast. It is limited to volatile mobile phases and volatile mobile phase modifiers. The drawback is that कि तुम्हारा mobile phase volatile होना चाहिए. You cannot use a mobile phase that is non-volatile. Or if it is not volatile, you can use volatile mobile phase modifiers, but still it's very limited, right? मोबाइल फेज या तो वोलेटाइल होना चाहिए या तो फिर तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट मोबाइल फेज मॉडिफायर्स होने चाहिए कि वो उसको वोलेटाइल कर सके. If the mobile phase solvent or mobile phase modifier is not volatile, excessive baseline noise and spiking will occur. If you are using a mobile phase जो volatile नहीं है या फिर ऐसा modifier यूज कर रहे हो जो volatile नहीं है, then you will witness excessive baseline noise and disturbance and spiking दिखेगा. मतलब peaks will be very inappropriate and not clean, so you cannot move ahead with the separation. Now this is a nice table to explain the difference between RI detector and ELST detector. So the first characteristic, which of them can be used with gradient illusion? Can it be used with gradient illusion? So RI detector, it cannot be used with gradient illusion. ELSD हाँ, इसको gradient के साथ use कर सकते हो. So the first point was gradient illusion. The second point, use online mixing for isocratic separation. ऑनलाइन मिक्सिंग, अगर आइसोक्रेटिक के लिए भी तुम्हें मिक्स करना है तो तुम कर सकते हो, आरआई में नहीं कर सकते ऑनलाइन मिक्सिंग, बिकॉज इसमें बल्क प्रॉपर्टी मेजर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा अगर तुम मिक्सिंग करोगे कुछ चीज की. ईएलएसडी में यस यू कैन डू ऑनलाइन मिक्सिंग. वोलेटाइल सैंपल्स किस में कर सकते हो तुम मेजर? आरआई डिटेक्टर में यस, इवन इफ इट्स वोलेटाइल यू आर नॉट अप्लाइंग हीट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यू कैन मेजर. ELSD में no, only the mobile phase should be volatile. Sample cannot be volatile. Use with non-volatile buffers or additives. तुम्हारा buffer mobile phase non-volatile हो तो किस में चलेगा? Refractive index में चलेगा, because there is no need for application of heat or anything. But ELSD में अगर buffer non-volatile हुआ तो you cannot use it. इफेक्ट ऑफ मोबाइल फेस कंटामिनेशन, अगर कुछ कंटामिनेशन हुआ तो किस में ज्यादा इफेक्ट आएगा? आरआई डिटेक्टर में सीरियस इफेक्ट दिखेगा तुम्हें, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है. बट व्हेन इट कम्स टू ELSD डिटेक्टर, द कंटामिनेशन विल कॉज मिनिमल इफेक्ट.
on the final peak. Adversely affected by changes in mobile phase temperature. RI detector एडवर्सली इफेक्ट होगा, यस। थोड़ा भी मोबाइल फेस का टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर में सीरियस इम्पैक्ट हो जाएगा। ईएलएसडी में नहीं होगा टेम्परेचर के चेंज करने पे। नेगेटिव एनालाइट पीक्स पॉसिबल आरआई डिटेक्टर में, यस, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे हो तो नेगेटिव पीक्स भी पॉसिबल है, बट ELSD में नेगेटिव पीक्स आर नॉट पॉसिबल। मैग्नीट्यूड ऑफ बेसलाइन अपसेट, RI डिटेक्टर में बेसलाइन अपसेट बहुत जल्दी और ज्यादा हो जाता है। ELSD में बेसलाइन स्टेबल रहती है, सो स्मॉल इफेक्ट आता है। डिटेक्टर लीनियरिटी RI डिटेक्टर की अच्छी है एंड ELSD की कंपैरेटिवली इट इज नॉट दैट गुड। Special venting is required. RI में you don't require any venting, but ELSD में yes, you will require special venting because तुम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करके उसको पूरा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नेबुलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हो, so venting will eventually be required. Convenient operation. ELSD is a more convenient option compared to diffractive index detector. So these are all the points. Gradient illusion, isocratic illusion, but online mixing possible किस में है? Then volatile samples, non volatile buffers किस में use कर सकते हो? Mobile phase contamination का effect किस में है? Mobile phase का temperature किसको ज़्यादा effect करेगा? Are negative analyte peaks possible? Magnitude of the baseline upset, linearity of the detector, venting चाहिए कि नहीं चाहिए, और convenient operation. These are the characteristics and then there is this suitable answer कि कौन सा detector कौन सी characteristic को follow करता है. Comparison between HPLC and UPLC. So now many people might be confused that what is the difference between high performance liquid chromatography and ultra high performance liquid chromatography. So here I have mentioned the characteristics and then differences क्या है HPLC में and UPLC में. So we will take a quick look at it. Starting with particle size. HPLC में the particle size will be 3 to 5 micrometer. UPLC में particle size is very low. It is less than 2 micrometer. HPLC में तुम्हारा 3 to 5 micrometers होगा particle size, whereas UPLC में it will be less than 2 micrometers. How much maximum back pressure will be allowed? 35 to 40 MPa less. So इसमें 35 to 40 pressure will be allowed, and UPLC में obviously ultra high performance है, ज़्यादा pressure allow करेगा, 103.5. 35 to 40 है और इसमें 103.5 है. Coming to the column, the brand names are different. HPLC के लिए Ultima C18 है, so UPLC के लिए Equity UPLC BAH C18 कॉलम का नाम है. दो Equity HPLC के लिए भी कॉलम्स बनाता है, but it is mentioned then that this column is for UPLC and this one is for HPLC. डिफरेंस क्यों है कॉलम में? बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा पार्टिकल साइज अलग है दोनों का, एक में 3 to 5 है और दूसरे में 2 से भी कम है. सो बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल साइज द कॉलम्स आर different for both these techniques, HPLC and UPLC. The column dimensions are also different. HPLC का column dimension 150 into 3.2 है, UPLC में 150 into 2.1 है. 150 into 3.2 for HPLC and for UPLC it is 150 into 2.1 millimeter. The column temperature
HPLC के लिए 30 डिग्री सेल्सियस है. UPLC can withstand temperature till 65 डिग्री सेल्सियस. Volume injection. HPLC में you inject 5 microliters and UPLC में you will be injecting 2 microliters. As small a quantity as 2 microliters is also enough for the separation. HPLC में you are taking 5 microliters and UPLC में you are just going with 2 microliters. Sample throughput. It is less for HPLC sample throughput and more for UPLC because कम sample में अच्छा separation UPLC में मिल रहा है. So the throughput, overall sample throughput is more in UPLC. Sample preparation. Simple in HPLC, कुछ ज़्यादा prepare नहीं करना होता है, but UPLC में the process becomes tedious. Column coagulation. HPLC में column coagulation does not take place, but UPLC में क्योंकि तुम्हारे particle size column के और भी छोटे हैं, 2 micrometer से भी छोटा है column particle size, so chances है कि ज़्यादा column coagulation take place होता है. Analysis time. HPLC में more time is required compared to UPLC. UPLC will take less time for a particular analysis. Sensitivity. HPLC is less sensitive as compared to UPLC. UPLC की sensitivity जो है ज़्यादा high होती है. So I hope you are clear with the differences between HPLC and UPLC. We'll move forward. Advantages of HPLC. High resolution and speed of analysis. अच्छा resolution मिलता है तुम्हें and analysis की speed भी बहुत अच्छी है. It takes less time and gives you real good results. HPLC columns can be reused without repacking or regeneration. You can reuse these columns. You don't need to repack it or regenerate it. The ready-made columns come. Once you purchase those from the market, you can reuse it. So reuse of columns is possible. Greater reproducibility due to close control of the parameters affecting the efficiency of separation. Reproducibility बहुत अच्छी है. Once you do a particular kind of separation in one setup, once you change that setup and move ahead to another complete lab setup, तुम्हें results same मिलेंगे. But you just need to control the parameters, temperature, pressure, ये flow rate, सबको control करके चलना है. Then the reproducibility is real good. Easy automation of instrument operation and data analysis. पूरा instrument जो है automatic होता है. From the sample injection to the detection, everything is automated. Data analysis, you will ultimately get that spectra chromatograph on the screen. पूरा chromatograph मिल जाएगा. You can also calculate the peak area from the software only. So everything is easy and automated. Adaptability to large scale preparative procedures. You can use it for large scale procedures also. It's easily adaptable technique. So these are the advantages. Resolution is really good. Speed is extremely good. Fast analysis is possible. Columns can be reused. Reproducibility is also very good. You just need to control the parameters. Automation is possible. The full instrument is automated. And there is this great adaptability to large scale procedures. So these are the advantages of HPLC. Coming to the disadvantages of our technique. What are the disadvantages of HPLC? The cost. This is the main disadvantage. The instrument is extremely costly, about 40 to 50 lakhs. So it's not easy for everyone to buy an HPLC and start working on it. So the instrument is costly, plus complexity. The instrument is found to be very complex. It has 3-4 parts. Detector है, sampling tray है, column है. फिर the software is also quite complex if you are operating it for the first time. So this is a disadvantage. थोड़ा complex है technique. Low sensitivity for some compounds. Some compounds, when you try to analyze these with HPLC, you will see that
the technique is very less sensitive for it. Irreversibly adsorbed compounds not detected. Some compounds might have strong affinity for the stationary phase and वो permanently absorb हो जाएंगे तुम्हारे phase में, stationary phase में. So when it's irreversibly attached, you won't be able to remove that compound from the stationary phase. वो column के साथ absorb हो गए हैं, अब वो निकल नहीं रहा है column में से. So that cannot be detected because, and you won't even know that the column has irreversibly attached one of the compounds. Co-elution is difficult to detect. एक साथ एक ही टाइम पे अगर दो compounds elute out हो रहे हैं, then it is very difficult to detect such type of compounds. For example, caffeine is coming out and being detected at 2 minutes, and theophylline also is being detected at 2 minutes. तो दोनों का इल्यूशन साथ में हो रहा है, and then I won't be able to differentiate that the peak I am getting is because of which compound. Is it because of caffeine or is it because of theophylline? So these are the disadvantages. We'll repeat once. The cost, the complexity of operation, less sensitive for some compounds. Then there are some compounds जो irreversibly adsorb हो जा रहे हैं, and then co-elution is difficult to detect. So we are done with the disadvantages of HPLC. Coming to the applications part. Applications of high performance liquid chromatography. It is used in various sectors. 4 sectors have been mentioned here: pharmaceutical or biopharmaceutical sector, environmental, clinical, food and flavor sector. So seeing the first one, pharmaceutical or biopharmaceutical sector. Quality control, pharmaceutical quality control में use होता है. Shelf life determinations of pharmaceutical products. You can determine the shelf life determination, like you can identify for when, how long a particular compound is stable by seeing कि उसके degradation products तुम्हें दिख रहे हैं या नहीं HPLC में. Identification of counterfeit drug products. कुछ drug products होते हैं which claim to be as good as the original ones but they are not, so you can identify that they are counterfeit products. Complex molecule का separation is possible. So these are the pharmaceutical part or biopharm part, that it can be used in quality control, shelf life determination, identification of counterfeit drug products, and complex molecule separation. Moving on to the next sector, environmental sector. Biomonitoring of pollutants. Pollutants ka biomonitoring is also possible using HPLC. Water monitoring. Water monitoring as in तुम water में check कर रहे हो the content of phenol in water, the content of toxic components, you will be checking these things. So that is the environmental part. Pollutants can be monitored and phenol content and toxic components of water can be monitored. Moving to the next, clinical aspect. Analysis of antibiotics and blood substances. You can analyze antibiotics using HPLC and you can also analyze blood substances using HPLC. Detection of endogenous neuropeptides in brain extracellular fluids. Brain के extracellular fluids में तुम neuropeptides भी detect कर सकते हो. So these are the clinical aspects, that assays of antibiotics, analysis of blood substances possible. Detection of these neuropeptides in the brain fluids is also possible. Food and flavor industry में sugar analysis in fruit juices. Fruit juice में कितना sugar content present है, ये तुम determine कर सकते हो using HPLC. Ensuring soft drink consistency and quality. You can also determine soft drink की consistency कैसी है, quality कैसी है using HPLC. So the food and flavor industry involves analysis of sugar which is present in fruit juices and also determining the soft drink consistency and quality of the soft drink. Another HPLC application apart from these, like in the food flavor sector, was to determine caffeine content in soft drinks. Most of the soft drinks like Pepsi, Thumbs Up, these have a particular content of caffeine present. So you can also do a study which determines the caffeine content in different soft drinks.
Everything is possible using this technique, high performance liquid chromatography. So we are finished with this topic over here. With these 3 videos, we have completed the full topic in depth. So I hope you guys have understood it, and thank you for listening.